Welcome back everyone. So in last video lecture we have discussed about fungi's characters and we have classified fungi, right? And now we will continue with the fungi only. Now we will see the reproduction of fungi. So continuing our fungi part, characteristics we have discussed, then classification we have seen, then now we'll come to reproduction. Okay, so let me tell you one thing. When we talk about reproduction in fungi, here we are just going to talk about the basic things. Okay, in your first year, your higher secondary level, the reproductive part of fungi, we need to know only the basic things only. The terms only we need to know. Okay, in details not necessary and it is not included also in your syllabus. Okay, we will not go in details, we will just know the basic things, we will know the terms in your higher secondary level, the reproduction part. Okay, so we'll just remember the name, the term and few things. But if you go to higher study level, you need to study all those in details broadly. But here basics only. Okay, so we will see the basic things only here. All right, so coming to reproduction, the reproduction of fungi, fungi show two types of reproduction, asexually and sexually. Okay, again it is broadly classified into many types again, so we're going to see that one by one. So fungi is classified into, based on the reproduction, it is classified into asexual reproduction and sexual reproduction. So I have said it in a short in my previous lecture, asexual and sexual. So in asexual, there will be no any fusion of gametes. There will be only one sex involved. Okay, either male or female, there will be involvement of only one particular sex only. But in case of sexual reproduction, there will be involvement of two opposite sex, male and female. Then there will be fusion of gametes, right? So in basics, that is the difference between asexual and sexual. You already know, you have got it in your school life, school level. Okay, so in asexual reproduction in fungi, it is again classified. It has many types. Okay, asexual reproduction in fungi has again many types. The first one is known as fission. Okay, so we will not go in details. We will just know the basic things. Ami khali basics kini he janim yat. Details at jabo nalage. Second year juntu syllabus ase. That আমি এই reproduction part খিনি আমি খালি basics খিনি জানিম, the terms খিনি জানিম. Okay, details ত না যাম. Details ত গলে আৰু বেলেগ হৈ যাব, এটো বেছি broadly হৈ যাব আৰু syllabus তো নাই. কিন্তু তোমালোকে যেটা higher studies level লৈ যাবা, তেতিয়া তোমালোকে এইবোৰ details ত পঢ়িব লাগিব. Okay, so for the first is known as fission. Then we have budding. Then we have fragmentation. I'll just explain it in short, all those terms. Wait for a moment. So we have fission, we have budding, we have fragmentation, then we have zoospores, then we have aplanospores. Then again we have hypnospores. So these are the various types of asexual reproduction shown by fungi. So the remembering part is that the fission, budding and fragmentation. Okay, ये तीनों को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं. We can also call it as a vegetative
reproduction. ठीक है. Fission, budding and fragmentation, we also call it as a vegetative reproduction, and rest are asexual reproduction only. This is also asexual reproduction, but we also use another term, vegetative reproduction. In fission, what happened? One cell give rise into two daughter nuclei. देखो, in short I will try to explain. ठीक है, मैं shortly basics खिनि কৈ দিম, but details ত যাব নালাগে. So shortly मैं কৈ আছো, fissionত কি হয়, এটা সেল থাকিব, তাত হেতু সেলে দুটা নিউক্লিয়াই ফর্ম করে. এটা সেলে প্রথম কি করে, দুটা নিউক্লিয়াই ফর্ম করে. ওকে, again I am pronouncing it as a nuclei because it is a plural name. So what happened in fission? One cell give rise into two daughter nuclei. আমি কওঁ daughter nuclei বুলি দেই, daughter nuclei. This daughter nuclei will develop, okay, they will grow in size, they will become big, they will then later on they will form a new organism. कोई भी हो फंजाई का, तो एक सेल से पहले दो सेल में प्रोड्यूस करते हैं, वो सेल धीरे धीरे बढ़ेंगे, बड़ा होंगे, उसके बाद दोनों सेल क्या होंगे, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे. Then this cell again give rise into two daughter nuclei each. Okay, फिर से ये दोनों सेल दो daughter nuclei प्रोड्यूस करेंगे, and the process goes on. The process goes on. There will be a cell, one cell, it will give rise into two daughter nuclei. These two daughter nuclei will develop to its size, it will grow in size, it will become big, and it will form a particular organism. Okay, then again those two cells will give rise into again two daughter nuclei. These two daughter nuclei, again it will develop to its size, it will form an organism. Okay, then again it will give rise to two daughter nuclei each. So the process goes on. This type of process we call it as a fission. Okay, I hope you understood. It is not there in your NCERT book. Okay, only the terms are given. Again, we do not need to go in details. So these are the basic things you need to know. एक सेल होते हैं, वो सेल से दो ऑर्गेनिज्म पहले तो सेल फॉर्म करेंगे, उसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं. वो दो डॉटर सेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर फंजाई फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर से वो दो सेल दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे. ओके, प्रोसेस गोस ऑन, उसको ही हम लोग फिशन बोलते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. कमिंग टू बडिंग. बडिंग में क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होते हैं. ओके, ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स either from outside of their body or from inside of the body. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ईस्ट का. ओके, सो सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ एनी फंजाई. Let me not take example of any fungi. Okay, just let's try to understand in a simplest way. Suppose this is the body of any fungi. In case of budding, what happened? A tiny outgrowth, a tiny ball-like structure develop. ठीक है, छोटा सा गोल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. It can form either outside of the body, उसका बॉडी का बाहर फॉर्म करते हैं. बाहर मतलब जस्ट आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी, दे आर अटैच टुगेदर. ठीक है, बाहर का मतलब एकदम बाहर नहीं, बॉडी का बाहर नहीं, दोनों के साथ अटैच होके रहते हैं. ठीक है, अटैच होके रहेंगे. और इट कैन फॉर्म इनसाइड ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, सो दैट्स इट. इधर आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी फॉर्म करते हैं और इनसाइड ऑफ देयर बॉडी फॉर्म करते हैं. सपोज द बर्ड इज फॉर्म इनसाइड देयर बॉडी. ठीक है, वी आर टेकिंग दिस, वी कॉल इट एज ए endogenous budding. Okay, endogenous budding. Suppose it is formed inside the body, we call it endogenous budding.
अगर बाहर में फॉर्म करते हैं वी कॉल इट एज exogenous budding. See, whenever you come across a word endo and exo, remember endo means always inside, exo means always outside. Okay, remember this. Genus means formation. Okay, so I hope you understood. So क्या होते हैं, a tiny ball-like structure develops either on the outside of their body or inside of the body. Then this tiny outgrowth will develop in size, it becomes bigger in size. Okay, then ultimately it is going to, उसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है ये बॉडी के साथ डिटैच हो जाता है. ओके, इट डिटैच फ्रॉम द बॉडी, देन इट विल फॉर्म ए न्यू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इट विल फॉर्म न्यू पर्टिकुलर फंजाई. ठीक है, तो अगर ये इनसाइड होते हैं तो अंदर में ये इसका साइज़ धीरे धीरे बड़ा होते जाएंगे, उसके बाद फाइनली उसका बॉडी से डिटैच होके अंदर में ऐसा होंगे, उसके बाद फाइनली उसका बॉडी से निकल जाते हैं and it form new organism. All right, so this is about budding. Understood? What is budding? In simple, budding, it is a type of asexual reproduction shown by fungi. It is a tiny ball-like structure develops either on the outside of their body or inside of their body. That's it. The bud which is developed outside their body, we call it as a endogenous budding. The bud which is developed inside their body, we call it as a the bud which is developed outside their body, we call it as a exogenous budding. The bud which is developed inside their body, we call it as a endogenous budding. So that is about budding. I will explain these three terms. Okay, these three terms I will explain. If I go with this three, you will get confused. Just these things, try to remember these three things. Next we have fragmentation. Fragment means what? Small pieces. Okay, the name suggests its meaning in biology. In every term, in every word, the word itself tells its meaning. Just use your common sense. अपना brain को खोलो. Okay, अपना common sense use करो. नाम में ही meaning छुपा होते हैं biology में. Fragmentation, fragment. The word here it says fragment. Fragment means what? Pieces. कोई एक टुकड़ा. Okay, कोई भी चीज़ का टुकड़ा होते हैं. Pieces. So in case of fragmentation, what happened? The cell, suppose this is the cell of fungi, any fungi, एक cell होता है fungi का, this cell it breaks into pieces. Okay, this cells breaks into pieces. ये अपने आप टूट जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एक सेल में. Okay, अपने आप एक सेल में अलग अलग हो जाते हैं. Then each cell is capable of giving rise into a new fungi or new organism. This process is known as fragmentation. A cell breaks into small pieces and each pieces give rise into a new organism. ठीक है, उसको ही हम लोग fragmentation बोलते हैं. So these three are asexual reproduction only, but we give them a particular name, vegetative reproduction. Okay, then we have zoospores, aplanospores and hypnospores. Just remember, zoospores are motile, aplanospores are non-motile. इसमें क्या है देखो, स्पोर्स है, स्पोर्स फॉर्म करते हैं उन लोगों का बॉडी में, छोटा छोटा गोल गोल लाइक स्ट्रक्चर स्पोर्स फॉर्म करते हैं. माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज. ओके, छोटा छोटा स्पोर्स फॉर्म करते हैं. जो जू स्पोर्स होते हैं दे आर मोटाइल होते हैं. उन लोगों का स्पोर्स जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल दैट मीन्स दे कैन स्विम और दे कैन मूव. ओके, एप्लेनोस्पोर्स का स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं. Those spores cannot move from one particular place. Okay, that's you need to remember. Okay, so overall the asexual reproduction we have fission, budding, fragmentation, zoospores, aplanospores and hypnospores. So try to remember the term only.
the fission, budding and fragmentation, we also called it as a vegetative reproduction, and we have explained in short these three. Okay, so remember that term. तो ये सब asexual reproduction show करते हैं fungi. So these are the asexual reproduction. Now fungi can also show सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे दोनों सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होंगे, एक मेल होंगे एक फीमेल होंगे और दोनों अलग अलग गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, देन वो गेमेट फ्यूज होंगे, देन इट विल फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. मेल है फीमेल है, दोनों गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, गेमेट फ्यूज होंगे, उसके बाद दिस गेमेट विल फॉर्म जाइगोट. धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, जब आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वी विल अंडरस्टैंड. Okay, धीरे धीरे the fusion takes place, then form zygote, then zygote give rise to ultimately a new organism's body. That is sexual reproduction. So there are types of sexual reproduction in case of fungi. Okay, so we need to know the term. We have ascospores, we have oospores, then we have basidiospores. Okay, so these are the types of asexual reproduction shown by fungi. In details, we are not required to go in details. We need to know only the basic things in here, not required. Okay, details में जाना ज़रूरी नहीं है. When you go to higher studies level, all these things you have to discuss in details along with the diagram. कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, reproduction कैसे show करते हैं, ये सब तुमको जब higher studies level में जाओगे तो ये सब को तुम लोग details में पढ़ना ज़रूरी है. अभी के लिए सिर्फ terms याद रखना. Okay. Okay, so these are the reproductions shown by fungi. Next, we need to see in short, हम short में देखेंगे the events that takes place in sexual reproduction in fungi. If you hear some kind of noise in my background, that's a noise. It is, some construction is going on. So sorry for that if you're getting some kind of unpleasant noise. So sometimes that's why the sound become very unpleasant, because some construction is going on out there. That is the sound come from that side. Next, we need to know the events of sexual reproduction in fungi in short. हम सिर्फ शॉर्ट में देखेंगे, बेसिक्स ही देखेंगे. यहाँ पे जो डिटेल्स में देखना ज़रूरी है उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, जो डिटेल्स में देखना ज़रूरी नहीं है उसको हम लोग डिटेल्स में नहीं देखेंगे. ओके, माय एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द NCERT बुक. सो आई वांट यू टू फॉलो NCERT बुक, नो नीड टू टेक एनी अदर बुक. until and unless you complete NCERT book, do not follow any other books. Once you complete NCERT book, then you follow other books. पहले NCERT book follow करो. Each and every topic is important. Study thoroughly. Try to solve all the questions from NCERT book. Try to understand my lectures. If you don't understand, ask me. We will clear your doubt again. Okay, so we will go like that, slowly and steadily. The events of sexual reproduction in fungi we will see in short. पहले क्या होता है sexual reproduction में? Fusion of cell का fusion होते हैं, ठीक है, दोनों सेल का फ्यूजन होता है. फ्यूजन मतलब जॉइंट होना, जॉइंट. उसी सेल को हम लोग एज ए होल प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है. प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे व्हेन वी स्टडी द चैप्टर सेल. इज देयर इन योर फर्स्ट ईयर ओनली, बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. At first, what happened, since we are talking about sexual reproduction where there will be a fusion of two gametes, ठीक है. फ्यूजन का मतलब है जॉइंट होना एक दूसरे के साथ.
तो दोनों अपोजिट सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होते हैं इसमें, और दोनों अलग गेमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और दोनों अलग गेमेट्स एक साथ में आके ज्वाइन करते हैं, उसको ही हम लोग फ्यूज या फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट हैपन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है। सो देयर विल बी ए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल का फ्यूजन होते हैं, दोनों अलग सेल का फ्यूजन होते हैं। द सेल एज ए होल हम लोग उसको ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो सब देखेंगे व्हेन वी स्टडी द चैप्टर सेल। सो द सेल एज ए होल वी कॉल इट एज ए प्रोटोप्लाज्म, okay, don't get confused here, it is cell only, but as a whole we call it as a protoplasm. So there will be a fusion of protoplasm between two gametes, दोनों gametes का फ्यूजन होंगे, फ्यूजन मतलब ज्वाइन होंगे, ठीक है। वो gametes मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मतलब which can move from one place to other place, which can move with help of other substance, okay। नॉन मोटाइल का मतलब है कोई भी अगर गेमेट्स या स्पोर्स एक जगह से दूसरा जगह तक नहीं जा सकते हैं, which cannot swim, we should say swim, okay, they are present in a fluid structure, so let's use a word swim, not move होने से चल के जाना को मूवमेंट बोलते हैं, so let's use a word swim। सो दोनों गेमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मतलब कोई भी स्पोर्ट्स हो या गेमेट्स हो, दे कैन स्विम। नॉन मोटाइल मतलब एनी गेमेट्स और स्पोर्ट्स विच कैनॉट स्विम। सो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो पहले क्या होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर विल बी ए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमेट्स, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए, लेट मी टेक अनदर इंक टू लुक इट ब्यूटीफुल, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है प्लाज्मोगेमी के बारे में फॉर 1 मार्क, व्हाट इज़ प्लाज्मोगेमी, ठीक है। सो व्हाट इज़ प्लाज्मोगेमी? प्लाज्मोगेमी इज़ ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमेट्स इन फंजाई, बस। और यू कैन मॉडिफाई योर सेंटेंस, ठीक है, अपना सेंटेंस खुद बना सकते हो, बट टर्म्स होना पड़ेंगे उसमें, ठीक है। टर्म्स शुड बी देयर इन योर सेंटेंस। তোমালোকে নিজৰ সেন্টেন্স লিখিব পাৰা, কিন্তু যেনেকৈ লিখা কিয় এই টাৰ্মছখিনি থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। প্ৰোটোপ্লাজম টাৰ্মছ, মোটাইল নন মোটাইল এইবোৰ থাকিব লাগিব। তোমালোকে যেনেকৈ লিখা, মই যেনেকৈ লিখোঁ এনেকৈ লিখা দৰকাৰ নহয়। তোমালোকে যি বুজি পোৱা সেইটো বুজি পালে তোমালোকে লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰা, খালি টাৰ্মছখিনি থাকিব লাগিব। চ' প্ৰথম কি হয়, দুটা গেমেটছৰ ফিউজন হয়। সেই গেমেটছ কি হ'ব পাৰে, মোটাইল হ'ব পাৰে বা নন মোটাইল হ'ব পাৰে। মোটাইল গেমেটছ মানে কি হয়, যোনটো গেমেটছ এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে, সুইম কৰি যাব পাৰে, তো সেইটো গেমেটছক আমি মোটাইল বুলি কওঁ। নন মোটাইল গেমেটছ কাক কওঁ আমি, যোনটো গেমেটছ এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈ যাব নোৱাৰি, তাক আমি নন মোটাইল গেমেটছ বুলি কওঁ। তো প্ৰথম ষ্টেপছ বা প্ৰথম ইভেণ্ট কি হয় আমাৰ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ ফাঞ্জাইত, দুটা গেমেটছ আহিব, এটা মেল আৰু এটা ফিমেলৰ, দুটা গেমেটছ এটা জায়গাত লগ লাগিব, লগ লাগি পেলাই কি হয়, কি ফৰ্ম কৰিব এইটো আমি নেক্সট চাম। তো সেইটো লগ লগাটো আমি কি কওঁ, প্লাজমোগেমি বুলি কওঁ ইন বায়'লজিকেলি। অ'কে, এইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইভেণ্ট। ছেকেণ্ড ইভেণ্ট কি হয়, চ' নেক্সট what happen after plasmogamy, there will be a fusion। तो पहले सेल का फ्यूजन होते हैं, गेमेट्स मतलब सेल, that is a cell only, okay। प्रोटोप्लाज्म गेमेट्स दोनों सेल का अंदर ही रहते हैं, ठीक है, सेल ही है दोनों पे। तो पहले तो सेल का फ्यूजन होते हैं,
देन क्या होते हैं नेक्स्ट स्टेप, न्यूक्लियस का फ्यूजन होते हैं, बिकॉज द न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ओनली। देखो ये रफली मैं शो करता हूँ, ये सपोज सेल है, ठीक है। ओवरऑल जितना ओवरऑल सेल को ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सो सेल का अंदर ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं छोटा सा। तो पहले तो ये दोनों सेल का फ्यूजन होते हैं। सपोज ये मेल का सेल है, ये फीमेल का सेल है, therefore this is male cell and this is female cell. See, male in biologically symbolically it is written as like this, okay, and female it is written as like this. So I am showing it with the symbol, okay. So पहले ये दोनों का फ्यूजन होते हैं. So I will try to show in my diagram, but try to imagine. I may not be able to show you 3D structure, so try to imagine. ये मेल का सेल है, ये फीमेल का सेल है, दोनों फ्यूज हो गया, ठीक है. तो ये दोनों फ्यूज हो गया. So the fusion takes place here, ठीक है. तो fusion, this process, the fusion of two cell, we call it as a plasmogamy. We have already seen. Now next what happened, ये दोनों सेल का फ्यूजन होने के बाद दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होते हैं, ठीक है. तो ये जो सेल वॉल है ये ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं. देन ये दोनों सेल आपस में क्या होते हैं, जॉइन होते हैं, ओके. ये दुटा सेल নহয় নিউক্লিয়াছ, এই দুটা নিউক্লিয়াছ কি হয়, এতিয়া দুটা নিউক্লিয়াছ এটা জায়গাত ফিউজ হয়, ওকে, জয়েন হৈ যায় এটা জায়গাত. সো মই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম. সো ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড. সো দিছ টু নিউক্লিয়াই now they will fuse with each other, okay. So they will fuse with each other. সেইটো processকে আমি কি কওঁ, karyogamy বুলি কওঁ, okay. And that process we call it as a karyogamy. What is karyogamy? The fusion of two nuclei, we call it as a karyogamy, okay. Whenever there is a plural name, just always pronounce nuclei. If it is singular name, nucleus. और सेल का कोई सिंगुलर प्लूरल ऐसा नहीं होते, सेल ही बोलते हैं. सिंगुलर प्लूरल नाम नहीं होते, हम लोग डायरेक्ट सेल ही बोलते हैं, ओके. सो आफ्टर प्लाज्मोगेमी व्हाट हैपन, द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन मतलब जॉइन होना, ठीक है. फ्यूज बोलते हैं हम, द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस, ओके. सो दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन, you know, it takes place in next step, and that process is called it as a, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं फंजाई में, ठीक है. हम लोग फंजाई का बात कर रहे हैं ना, तो ये सब फंजाई में टर्म यूज़ किया जाता है. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं, व्हाट इज़ प्लाज्मोगेमी, व्हाट इज़ कैरियोगेमी, फॉर 1 मार्क, ओके. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दोनों फ्यूजन, दोनों न्यूक्लियाई, दोनों सेल का फ्यूजन होने के बाद क्या होते हैं सेल का. द नेक्स्ट व्हाट हैपन, द सेल अंडरगो सेल साइकिल, ओके. सेल साइकिल, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर, यू नो, you need to study very, this is very important, you need to study that chapter in a systematic manner. So we have this chapter in your first year only. So later on we will discuss, or the biology teacher will explain that chapters, the cell. So after what happened, the cell undergo cell cycle. Cell cycle का दोनों टाइप्स होते हैं, दोनों प्रकार का सेल साइकिल होते हैं. एक तो होते हैं माइटोसिस, एक तो होते हैं मियोसिस. कोई कोई ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मियोसिस शो करते हैं जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं. कोई कोई ऑर्गेनिज्म में दोनों माइटोसिस एंड मियोसिस शो करते हैं, ओके. सो दिस आर समथिंग न्यू दैट यू आर गेटिंग नाउ, बट वी विल डिस्कस ऑल दोज इन डिटेल्स इन द सेल साइकिल चैप्टर, ओके. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द नेम. नाउ सेल अंडरगो मियोसिस. मियोसिस क्या है वो जानेंगे जब सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ेंगे, ओके. सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, दिस सेल undergo meiosis, then it forms a zygote. It undergo meiosis and forms a zygote, ठीक है.
सो द सेल क्या होंगे, अभी मियोसिस स्टेज में जाएंगे। मियोसिस स्टेज में जाने के बाद क्या होते हैं, क्या क्या स्टेज होते हैं, ये सब डिटेल्स में जानेंगे अलग एक चैप्टर में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में। अभी के लिए जस्ट रिमेंबर द नेम। द सेल विल अंडरगो मियोसिस and forms a zygote. Now zygote will ultimately give rise into a haploid spores. Zygote give rise into a haploid spores. So most of the fungi produces haploid spores only. Haploid spores मतलब एक ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे एक सेल में। In one cell there will be only one chromosome. Okay, all this we will study in details, don't worry, but for now just try to understand or remember the term. और एक होता है डिप्लॉयड। इफ़ इट इज़ डिप्लॉयड, एक सेल में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इन केस ऑफ दिस वी फाइंड हैप्लॉइड स्पोर्स इन केस ऑफ फंजाई। ओके, मोस्ट ऑफ द फंजाई शोज हैप्लॉइड और प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स। Okay, so these are the events, that is the sexual events that takes place in fungi. First of all, what happened? There will be a fusion of protoplasm between the motile and non-motile gamete. Protoplasm is nothing but a cell only. Gamete is also a cell only. Okay, and then what happened? There will be a fusion of 2 nuclei and that process is known as karyogamy. पहले प्लाज्मोगेमी होंगे, उसके बाद karyogamy. Now the karyogamy undergoes meiosis and it forms a zygote. Then the zygote ultimately gives rise into a haploid spores. That's it. So these are the events that takes place, and the remembering part is this: plasmogamy, karyogamy, and overall the events. So try to remember. So sometimes the question asks from this one: what is plasmogamy, what is karyogamy? Okay, so next we will see the characteristics of its fungi, the types of fungi. Okay, पहले Phycomycetes, उसके बाद Ascomycetes, then Basidio, then Deuteritomycetes. We will see its characteristics one by one.